academic preparation. I thank the management of S.S.T. College for supporting such initiative. I thank the founder principal and chairman of S.S.T. College, Dr. J.C. Purswani sir. I also thank Dr. Khushbu Purswani ma'am, who is the IQSC coordinator of S.S.T. College, for supporting and guiding to organize this event. To impart his knowledge on this first day of Crash Course series, we have one of the most experienced and eminent personality among us. I welcome Assistant Professor Ravindra Phadke sir. Thank you, sir, for accepting our invitation and sparing your valuable time to deliver this session. I also welcome sir to start the event. But before that, I would like to give a brief introduction of Ravindra sir. Sir has completed his MA in economics. He has completed his MPhil, and currently Ravindra sir is pursuing PhD in economics subject. So he is having a vast knowledge of teaching economics to TYBCom. So I welcome sir to take the charge of the session and deliver the session to the students. Ravindra sir. Hello. Sir, am I audible to you? So you can start the session. Hello. Sir, unmute yourself. Yes, sir, you can start the session. Sir, you're not audible. Sir, you're not audible. No, you are muted, sir. Kindly unmute yourself. Can I start? Yes, yes. Now it is okay. You can start, sir. Okay, okay. Just give me 1 second. Yeah. उधर से सर, उधर से. PPT is visible? Yes, sir. Okay, okay, okay. Thank you very much. Very good morning to one and all. Thank you very much for continuous support. Thank you very much for a continuous support from S.S.T. College of Arts, Science and Commerce. It's my immense pleasure to work with S.S.T. College since last almost 7 years, and a continuous support from the management that every year without fail, they always ask me for a guest lecture or for the guest series. So it is kind of a family for me. Thank you very much once again, Ulhasnagar sir and Ulhasnagar ma'am, that every time
Sir, you are not audible. It is audible now? Yes. Okay. So usually the students of TYBCom or in general BCom students who have the fear that how to crack the paper for business economics, I do not know why they have the fear, but believe me students, it is one of the interesting subject. I will not say it is one of the easiest subject. Only you need to understand the crux of the entire paper. You need to understand how to understand the concepts which they have been delivered in the subject and what they are trying to basically explain to you. Okay. So foremost, first let me tell you one thing that your entire paper okay, is completely international economics. Okay, because you have various theories related to international trade, then terms of trade, balance of payment, and foreign exchange markets. So one thing which you have to remember that your entire paper is one of the branch of economics called international economics. Okay, because ultimately we have to understand all the theories, all the concepts which will be related to international trade, international organization, international trade blocks, or etc. So that way we have to first understand. Okay. Then your entire syllabus is divided into 4 modules. Okay. So the very first module is all about your international trade theories. Let me share a PPT with you. Okay, just one sec. Okay, so this is what we have entirely. Okay, see, so this is what we have the entire syllabus for your semester 6. So the first chapter is all about various theories which are developed by classical economists, some neoclassical economists, and modern economists, including Adam Smith, David Ricardo, Hexerolin, or etc. We have few more economists called Ravinsky theorem, Haberler's opportunity cost theory, but for your graduation level, these theories are mandatory, which you have to understand, which is in the first chapter. Then in the second chapter, you have to understand all about the terms of trade. So how basically the trade occurs, how basically trade happens, how the trade is working between two nations, and how the terms, how the conditions, how the rules, regulations made between trading partners or trading activities, then gains from trade. Like in case two nations who are establishing their trade, so in that case, how the trade occurs, and out of that trade, what kind of achievements which may they achieve, which may they own. So that's what we have to understand. Then different types of tariffs which we have to understand, because ultimately whenever the trade establishes, that time tariff occurs, different kind of taxes occurs, which may be non-tariff, which may be even direct tariffs also. Then how the nations could create their international economic integration.
So that's what we have to see. Like, we have various trade blocs, including SAARC, ASEAN, European Union, NAFTA, SAFTA, Benelux, Quad, or etc. So we have n number of international integrations, and how those integrations always works for unite the nation or unite the country. Then how the balance of payment happened, how the balance of payment is established, and how it is needed, how it is mandatory, and how the countries which are delivering or maintaining the credit and debit side together. So how the nations which are bi-curious to maintain their entire balance of payments. But as we know, the nations could not balance every time. So they have disequilibrium in the balance of payment. So we have to figure out that what are the reasons for disequilibrium in the balance of payment? What are the effects of disequilibrium in the balance of payments? Then what is the role of WTO, the former GATT, and how the WTO is now forming, how the WTO is framing rules and regulation, or you can say the basic fundamental rules for trading activities or trading partners in the economy, in the world economy. Wherever international trade occurs, definitely the currencies get exchanged, the currencies get always transferred from one nation to another nation. So in that case, how the currencies get exchanged, what would be the role of foreign exchange market around 100 years back, how today's foreign exchange market establishes. In the last, what is the role of Reserve Bank of India or any central bank of country interfere or intervene the foreign exchange market? Does any central bank could establishes their market overall foreign exchange? What is the role and how they are interfering in the foreign exchange market? Then how come usually the purchasing power is establishes? Because usually we might have seen that the purchasing power capacity of any currency would be different nation to nation. So certainly in one country, the power of one currency is less, and in other country, the same currency, you may find the currency is more powerful. So how it establishes? So very nicely and very smoothly, an economist called Gustav Cassel, who have explained the purchasing power parity theory. So this is what we have the entire syllabus. So we have total 13 chapters in our syllabus. So again, I'm telling you that the first three chapters will be completely related to what? International trade. They you have to understand all about the various international trade from a classical era. Then how usually the trade policies occurs between the nations, because the relations between countries may vary as per the economic conditions, as per the political conditions, as per the social conditions. So you may find different terms and terminology definitely in commercial trade policies, how the tariffs get imposed or etc. Then economic integration, balance of payment, then causes of balance of payment, disequilibrium in the balance of payment. Then what kind of measures can be taken under balance of payments? What is the role of WTO? How the WTO always embark the entire system? What can be the role of foreign exchange market? How the currencies get determined? How the parity of currencies get determined by exchanging one-to-one? And the last, again, we have to see the role of central banking in the international trade or in the foreign exchange market. Okay. So now, without wasting further time, let's begin with one by one. With the very first chapter is all about our various theories of international trade. Okay.
Okay, students, see, in the very first chapter of your entire syllabus is begin with various theories of international trade. So here, in detail, you have to study two theories. The one which will be called as David Ricardo's comparative cost advantage theory, and second will be Heckscher-Ohlin theory of international trade. To understand the David Ricardo's comparative cost advantage theory, we have to first understand the Adam Smith's absolute cost advantage theory. तो ये पहली जो थियरी है, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो एडम स्मिथ जो थे, ये एडम स्मिथ बेसिकली क्या कहना चाहते थे या उनका क्या कहना था. So that what we have to first understand. The very foremost theory which is called as absolute cost advantage theory. ठीक है, absolute cost advantage theory. अब ये theory क्या है, basically क्या है, let us understand. ठीक है, देखो, every nation has some drawbacks, some benefits, correct? So some nations have the various resources, and those resources are definitely helpful to make money, to earn money. Like Gulf countries, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि Gulf countries are well cherished with petroleum products, with oil refineries, natural gas, or etc. Correct. So in that case, what happened? The nations will definitely export those kind of products to the world, because they have what? They have all the resources. What they have all the advantage of exporting those commodities. So definitely when they are exporting such commodities to the world, they could easily make money. They could easily earn money. That is what is, we call it as an absolute advantage, because those resources which are endowed by the nature, those resources are purely gifted by the nature. तो ये जो resources है, ये सारे resources gifted है, nature ने दिए हुए हैं. Means they are not putting there any financial resources. They are not putting any special resources where they could easily make money out of their nurture. Now, in nutshell, I would say is that they have the absolute cost advantage, so they could easily drive those resources and they can easily make the money. That is what is we call it as an absolute advantage. उनको पूरा फायदा मिलता है. क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन लोगों के पास ये जो रिसोर्सेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ना उनको तेल बनाना है, ना उनको नेचुरल गैस बनाना है, कुछ नहीं बनाना है. वो रिसोर्सेस पूरी तरीके से नेचर ने दिए हुए हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि दैट दे कैन इजीली रिलीज दोज रिसोर्सेस टू द वर्ल्ड एंड दे कैन मेक मनी, दे कैन इजीली अर्न मनी, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, जिसको हम कहते हैं वेरी क्लियरली दे कुड मेक अ मनी. एंड दिस पर्टिकुलर थॉट इज propounded by whom? Propounded by Adam Smith. So just remember, absolute cost advantage is equal to Adam Smith. ठीक है. जो दूसरी जो थियरी है, that second theory is all about okay. So ये जो दूसरी जो थियरी है ना, this theory is given by David Ricardo. Just one second. Okay. So ये जो पूरी थियरी है, ये पूरी थियरी डेवलप की गई है हमारे दूसरे जो महाशय है, जिसको हम कहते हैं डेविड रिकार्डो. ठीक है. सो डेविड रिकार्डोस थियरी is more focused on comparative cost advantage. So what is a comparative cost advantage? देखो, एडम स्मिथ ने क्या बोला कि अगर किसी देश के पास जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को प्रोड्यूस करके, उन रिसोर्सेस को नेचर से एक्सट्रैक्ट करके दे कुड इजीली सेल इट टू द वर्ल्ड. करेक्ट है. लेकिन रिकार्डो क्या कहता है कि कुछ देशों में
ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे दे कुड मेक द प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज, प्रोडक्शन ऑफ टू रिसोर्सेज. सो इन दैट केस what they should produce and what they should export. उनको क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए और उनको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसकी वजह से they can easily make money. कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पे दो प्रोडक्शन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ये देखा जाता है कि हम एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करें या वाई को ज्यादा प्रोड्यूस करें, एक्स को प्रोड्यूस करके हमें फायदा होगा या वाई को प्रोड्यूस करके हमें फायदा होगा. सो दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इस थियोरी को कहा जाता है इवन 2x2 थियोरीज. 2, ठीक है, 2x2 थियोरीज. अब ये 2x2 थियोरी क्या है? बेसिकली 2x2 थियोरी को समझने के लिए पहले हमें तो कुछ बेसिक असम्पशंस है उनको समझना पड़ेगा. एंड स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो असम्पशंस है ना, ये असम्पशंस आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ना सेम असम्पशंस है जो हमें हेक्सर ओलिन के लिए भी देखते हैं. सो आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो सेम असम्पशंस आप हेक्सर ओलिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. सिर्फ वहां पे एक और 2 बढ़ेगा, क्योंकि हेक्सर ओलिन थियोरी जो है इट इज 2x2 थियोरी, और ये जो थियोरी है विच इज 2x2 थियोरी. ठीक है, अब ये 2x2 क्या है? बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द 2 प्रोडक्ट्स. ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स और 2 कमोडिटीज एंड 2 कंट्रीज. 2 देश है, ठीक है, 2 देश है और ये 2 देश 2 कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो लेट अस अज्यूम, एक अज्यूम करते हैं कि इंडिया इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? इंडिया इज प्रोड्यूसिंग वाइन एज वेल एज इंडिया इज प्रोड्यूसिंग क्लोथ. तो भारत जो है वो क्लोथ को भी प्रोड्यूस कर रहा है और वो वाइन को भी प्रोड्यूस कर रहा है. देखा जाए तो यस, द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग बोथ, करेक्ट. सो इन दैट केस देश को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? देश को वाइन को प्रोड्यूस करना चाहिए या देश को क्लोथ को प्रोड्यूस करना चाहिए? कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके देश को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा? सो वी हैव n number of assumptions here that it is a perfect competition. Then the entire theory which will be costing at a labor units. Labor is the only factor of production. It is homogeneous. It is perfectly mobile. जो भी factors है, ठीक है, labor जो factor है, all the factors will be used as a mobile in the vicinity in a country, but they will be immobile, they will be immovable outside the country. Then there will be a complete free trade. There will be a complete free trade. There will be no restrictions by taxes or tariffs or etc. ऐसा कोई restrictions वहाँ पे नहीं है. Technology जो है, that technology will not be changed. ठीक है, it will be a continuous. So in that case, the technology will be definitely helpful for the country to produce commodities. Transport costs will be nil. Transport costs they will not include for sure. Both the nations will have full employability, and full employment is one of the biggest, or you can say is one of the major assumption of the market. So this is what we have the entire theory. ठीक है, this is the diagram where you easily understood what it is all about. ठीक है, the blue line which is PL line is all about the PPC curve, and PPC curve for Egypt and PPC curve for India. Okay, the very next is theory is called as the Heckscher-Ohlin theory. These two are economists, the one which is called as Eli Heckscher and one which is called as Bertil Ohlin. ठीक है, so ये दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी थी. ठीक है, एली हेक्शर जो काफी नामी ऐसे इकोनॉमिस्ट हम कह सकते हैं,
जिन्होंने इस इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज को लिखना शुरू कर दिया, but apparently he died because of his some health issues or etc. Bertil Ohlin, who continued his entire work, and he has completed the incomplete work of Heckscher-Ohlin, and that is what call it as a Heckscher-Ohlin. So Heckscher can say is a tutor, okay, and Bertil Ohlin was the pupil of Elie Heckscher. So the entire theory is based on two thoughts basically. Okay, the one thought which is we call it as what? Factor endowment. What is the factor endowment? And number two is factor abundance. ठीक है, एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? एंडोमेंट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो नेचर ने गिफ्ट दिए हैं आपको, नेचर ने गिफ्ट दिए हैं, मतलब द एंटायर resources which are endowed, which are completely given by the nature. It is not created by any human, it is not created by man-made factor of production. ठीक है, और दूसरा होता है फैक्टर अबंडेंस. अबंडेंस का मतलब क्या होता है कि चलो ठीक है बाबा कि आपके देश में ऑयल रिसोर्सेस है, बट those resources are not self-sufficient, those resources are not enough, those resources could not fulfill the demand for the other nations. The country could not able to export those commodities. So in that case, what happened? The resources are endowed, but they are not abundantly available. So one thing is endowment and second is abundance. Endowment का मतलब क्या होता है? जो नेचर ने गिफ्ट दिया है वो, और abundance का मतलब क्या होता है? Availability of resources. So whether those resources are in a huge amount or whether those resources are in a small amount. In case if the resources are in a huge amount, then definitely country could be easily exported. वो बहुत आसानी से export कर सकते हैं, correct है? But in case if the availability of those resources are very small, are very narrow, in that case what happened? They could not make the supply of those resources. Like India, like अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी we have oil resources. Do you know the area called Bombay High? Bombay High region जो है वहां पे हमारे यहाँ पे oil resources है, लेकिन पता है those resources are really limited, which we could not make us export of those resources because demand for those oil resources are huge. हमारे ही देश में ऑयल रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा डिमांड है, हम करें भी तो क्या करें, हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अंडरस्टूड नाउ? सो हेक्सर-ओलिन के लिए दो चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, द वन व्हिच विल बी कॉल्ड एज एंडोवमेंट एंड वन व्हिच विल बी कॉल्ड एज एन अबंडेंस. ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस विल बी योर सेकंड चैप्टर, हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, so we have a lot of chapters here basically. Okay, let's start now with next, which is we call it as terms of trade. So what it is all about, the terms of trade. See, always remember one thing that wherever trade establishes between two nations, okay, so it may be India US, India Russia, इंडिया इजिप्ट, इंडिया जापान. ठीक है, सो जब भी कभी भी ना दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उन दो देशों के बीच में जो पॉलिटिकल कंडीशंस है, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है या सोशल जो सिचुएशंस होती है, ठीक है, ये बहुत मायने करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रेडिंग बिटवीन countries are not purely monetary. They are certainly based on even the political condition, economic situation, social stability, monetary factors, and many more factors always embark to establish the trade. So certainly we have to do trade out of our interest. Certainly we have to do the trade out of our profit. Certainly we have to do the trade out of our curiosity. You can say that.
ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिनके साथ हमें व्यापार नहीं करना है, बट देन एज पर द WTO गाइडलाइंस वी हैव टू एक्सपोर्ट, because as per the WTO guidelines that every nation has to make demand and supply of essential commodities and services as per the demand. So in that case, you could not deny that we have a political rivalry or we have political some excuses. So in that case, you could not give them any excuse. ठीक है? So वहां पे तो आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, even if your relations or even if your terms are not good in that way. So we have many more basically terms of trade. ठीक है? So terms of trade relating to the ratio of exchange between, so we have a net barter, we have a gross barter, we have an income terms of trade, we have a single factorial trade, we have a डबल फैक्टोरियल ट्रेड. सो ये काफी सारे अलग अलग मेथड्स है, ये काफी अलग अलग सारे मेजर्स है जिनकी वजह से यू कैन इजीली एस्टैब्लिश अ ट्रेड. ठीक है. I will definitely share all my notes with you for definitely. Okay, so don't worry about it. Now the next is gains from trade. Okay. Okay, so let us now understand what is the concept, call it as gains from trade. ये concept क्या है? अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट. ठीक है. देखो, gains का मतलब क्या होता है? gains का मतलब होता है पाना. Like you have to earn something, that what you are gaining out of your international trade. कि आप क्या हासिल कर रहे हो? What are you gaining? What are you earning out of the trade? Suppose India and Japan is having a trade. अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड है, व्यापार है. ठीक है. तो व्यापार करने के बाद उन दो देशों को क्या मिलता है, उन्हें क्या हासिल होता है, वो क्या पाते हैं. Always remember, international trade is not only exchanging commodities or services. I strongly believe they are even exchanging the culture also, the dialect also, the food also, thoughts also, memories also. So that way we are basically earning, that way we are basically making the trade which is foremost important for the nation. So here we have basically three methods of measuring gains from trade. The one which will be called as Ricardo's approach. Okay. Then second which will be called it as Jacob Mill's approach. And then the third one which will be called as Edgeworth approach. Okay. Edgeworth Marshall's approach. तीन approaches है. एक पहला होता है जिसको हम कहते हैं रिकार्डो अप्रोच है, दूसरा अप्रोच है जिसको हम कहते हैं जेस मिल है, और तीसरा जो अप्रोच है जिसको हम कहते हैं मार्शल एजवर्थ अप्रोच. ठीक है. अब देखो ये रिकार्डो का क्या अप्रोच है बेसिकली. In a nutshell, I'm just giving you quick explanation with this diagram, that we have a PPC curve, which is a production possibility curve before and after trade. Okay. So one which is before trade and one which is after trade, and IQ which is isocont. That curve is intersecting both the PPC curves at the point of S and at the point of T. Okay, as you can see. So the before the establishing a trade, the PPC curve is PQ, and as soon as they increases, they expanding their trade, the curves which increases from OQ to OB and from OA to OC. So that way they are measuring the trade, they are measuring the profit level. So that way what we have here,
there is one more diagram. As you can see, OA and OB, okay, these two are basically, you can say, is the ray line. Ray is nothing but the production line, and OR and OI are the offer curve of India. देखो ऑफर कर्व क्या होता है, यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली होती है रेसिप्रोकल डिमांड और दूसरी होती है ऑफर कर्व। अब ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका पूरा देश कितना डिमांड करता है, हाउ मच दे आर डिमांडिंग, अंडरस्टूड। लाइक भारत ईरान से हर साल कितना तेल खरीदता है, हाउ मच बैरल ऑफ ऑयल विच वी इंपोर्ट फ्रॉम एन ईरान। रेसिप्रोकल, देखो एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड रेसिप्रोकल डिमांड। इंडिविजुअल मतलब एक इंसान का, मार्केट ग्रुप ऑफ पीपल, थर्ड विल बी रेसिप्रोकल पूरे देश का, ठीक है। इंडिविजुअल, ग्रुप, देश, ये तीन अच्छे से याद रखना है, रेसिप्रोकल डिमांड, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑफर कर्व। ऑफर कर्व क्या होता है? Offer curve is nothing but a graphical representation of reciprocal demand. Reciprocal demand को जब आप graphically represent करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं? Offer curve कहते हैं, ठीक है। So like what we are offering to Russia, what they are offering to India, हम उनको क्या ऑफर कर रहे हैं, हम उनको क्या बेच सकते हैं, उसके बदले में वो हमें क्या बेच रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एन ऑफर। वो होता है हमारा ऑफर कि इंडिया रशिया को क्या बेच रहा है? अनाज, फूड ग्रेन्स, ठीक है। उसके बदले में हमें रशिया से क्या मिल रहा है? मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी। सो दैट वे व्हाट वी आर ऑफरिंग देम एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग अस, इट इज नोन एज एन ऑफर कर्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। Okay, so this is what we have. The next is all about commercial trade policy. अब ये particular क्या है? What it is all about the commercial trade policy, ठीक है। So let's understand क्या है ये trade policy. देखो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी में बेसिकली वी हैव टू मेजर पॉइंट्स, ठीक है। द वन मेजर पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट आर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। सो पहली होती है फ्री ट्रेड, दूसरी होती है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अब ये फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? काफी बार पता है व्हाट हैपेंड दैट स्टूडेंट्स को क्या लगता है फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि व्यापार जो हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। नहीं, फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है ना, वहां पे टैक्सेस को नहीं लगाया जा रहा, टैरिफ्स में उनको एग्जम्पशन दिया जा रहा, टैरिफ में उनको छूट दी जा रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एक्टिविटीज। मतलब countries will only meet the demand and supply of goods and services. They don't require to pay any kind of special taxes or any kind of tariffs. दूसरा होता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अब ये प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट वन मिनट, देखो अब ये प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है ना कि जब भी कभी भी देश
बहुत ज्यादा व्यापार करने लगता है, जिसकी वजह से शायद से पैसा जो है, वो जो पैसा है वो बाहर के देश में जा रहा है। So in that case, they will impose certain amount of taxes. They will impose certain amount of duties also, which may hinder the cause of trade. उससे क्या होगा, जो व्यापार है वो व्यापार काफी हद तक सीमित हो जाएगा, लिमिट में आ जाएगा। जैसे कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने क्या किया, ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर क्या किया, दे हैव स्टार्टेड इम्पोजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटीज काफी सुने, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं सुने। बट नाउ चाइना हैज टू पे इवन फॉर द एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अंडरस्टूड? तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पूरे चैप्टर के अंदर, द वन विच विल कॉल्ड एज व्हाट, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज ओके। सो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ्स द कंट्री में इम्पोज। सो कौन से जो है वो टैरिफ जो है वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, टैरिफ क्या होता क्या है, बेसिकली टैरिफ क्या होता है, देखो टैरिफ ना इज अ काइंड ऑफ टैक्सेस, इज अ काइंड ऑफ टैक्सेस जो जो कंट्रीज इंपोर्ट कमोडिटीज या इंपोर्ट सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं। सो जिसमें आ सकते हैं कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, टोल। ठीक है, सो दीज ऑल आर द टैरिफ्स। एंड नॉन टैरिफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि यू कुड इंक्रीज द कोटा सिस्टम, मार्केट शेयरिंग, तो ये सब नॉन टैरिफ में आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, क्या है टैरिफ्स, कौन से तो देख लेते हैं फटाफट। देखो, a tariff is a duty imposed on a commodity that are traded across the national border of a country. ठीक है, अब देखो कौन से टैरिफ्स यूजुअली है। फर्स्ट विच विल बी कॉल इट एज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, स्पेसिफिक टैरिफ है, एड वॉल्यूम टैरिफ है, कंबाइंड टैरिफ है, कंपाउंड टैरिफ है, स्लाइडिंग स्केल है, टैरिफ रेट है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है, रेवेन्यू, प्रोटेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जैसे कि सिंगल कॉलम टैरिफ है, डबल कॉलम है, मैक्सिमम मिनिमम टैरिफ्स है, प्रेफरेंशियल टैरिफ्स है, रिलेशनल टैरिफ्स है, कंट्री काउंटर वेलिंग स्लाइड्स है, एंड एंटी डंपिंग की स्लाइड्स है। ठीक है, सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स हैं। हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से नॉन टैरिफ्स है। ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो नॉन टैरिफ में बेसिकली क्या क्या आता है आपके, पहला आता है आपका इंपोर्ट कोटा, मतलब कंट्रीज को क्रिएट देयर ओन कोटा, लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर कोटा के बाद आता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग, लाइसेंस भी करवाना पड़ेगा उन लोगों को। नॉन टैरिफ में देखो और कौन सा है, जैसे कि VRs है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है उसके यहाँ पे। Then you may find the exchange control है, that they could easily control the exchanges. ठीक है, so these all are the various non-tariff barriers. ठीक है, move on to the next chapter is all about economic integration. So what kind of economic integrations we have throughout the world. ठीक है, अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कौन से आते हैं देखते हैं पहले। ठीक है, देखो फर्स्ट ये इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट यूनाइट, टुगेदरनेस, एक साथ काम करो, एक साथ रह के काम करो, मिलजुल के काम करो, इससे क्या होगा, उससे एक दूसरे को फायदा हो सकता है, इंटीग्रेशन। अब ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, मतलब रिलेटेड टू मॉनेटरी, रिलेटेड टू मनी, that they don't require to make any kind of external bounds. ठीक है, अब कौन से इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखो
Integration means removal of trade barriers for smooth flow of goods and services into or out of nation. मतलब, they are just trying to remove all kind of barriers. They are just trying to remove all kind of hurdles. So they don't require to put any extra trade barrier. So it may be a preferential trade system, free trade system, or etc. ठीक है? देखो कौन से हम लोग देख लेते हैं फटाफट, as we have a time limit, ठीक है? Otherwise I could take you till the evening. देखो पहला आता है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम या प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं PTA, ठीक है? देन वी हैव अ FTA, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि नाफ्टा है, दैट इज अ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, लाफ्टा व्हिच इज लैटिन अमेरिकन. देन वी हैव अ कस्टम्स यूनियन, दैट इज अ CU, ठीक है? देन वी हैव अ कॉमन मार्केट, वी हैव अ इकोनॉमिक यूनियन, we have a monetary union, we have an economic and monetary union, fiscal union, we have a complete economic integration also we have. So these all are the various economic integration, and it depends upon continent to continent, it depends upon region to region, how much they are interested and how much they are showing the interest. So out of their interest, out of their demand, usually the trading activities or trading partners, they may increases. ठीक है? After economic integration, we have a balance of payments. So ये balance of payments क्या है? देखो एक तो बहुत सिंपल है ना कि अगर कोई देश व्यापार करता है तो डेफिनेटली दे आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मींस दे आर डेफिनेटली एक्सचेंजिंग करेंसीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है. लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी ज्यादा इंपोर्ट हो जाता है, और जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा, जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा, उतना ज्यादा पैसा बाहर के देश में चला जाएगा, which is definitely not acceptable, which is definitely not acceptable. So what we have to balance, we have to balance. जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा. So it could easily balance the payment. ये क्या होगा? पेमेंट काफी हद तक बैलेंस हो जाए. ठीक है? अंडरस्टूड नाउ? So balance of payment is what basically? It is systematic record of transactions made or created by a country with the rest of the world. ठीक है? तो ये आपको पता ही होगा कि what is the structure of balance of payment? It is completely receipts and credits. ये आपको पता ही होगा, as you all are the commerce students. ठीक है? We have a different types of accounts. We have a trade account, we have a current account, we have a capital account, we have a peripheral account. ठीक है? तो ये है. फिर उसके बाद usually what happened that whenever the trade establishes, ठीक है, काफी बार ये जो ट्रेड एस्टैब्लिश होता है ये ना इक्विलिब्रेट नहीं रहता है, तो काफी बार ये डिसइक्विलिब्रेट होता है. सो क्या रीजंस हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ रीजंस इट मे हैपन कि जिसकी वजह से जो ट्रेड है दैट ट्रेड कैन नॉट बी ऑकर कंप्लीटली और फुल्ली. सो वी हैव एन नंबर ऑफ रीजंस व्हिच ऑलवेज मेक इट. पहले तो हम लोग टाइप्स देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स वी हैव. ठीक है? अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है? तो पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन वी हैव अ साइक्लिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, देन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. ठीक है? फंडामेंटल, मॉनेटरी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. व्हाट काइंड ऑफ कॉजेस वी हैव? मे बी इंपोर्ट रिलेटेड, इट मे बी एक्सपोर्ट रिलेटेड. ठीक है? सो इंपोर्ट रिलेटेड में क्या आ सकता है? पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्यादा हो रहे हैं, एसेंशियल गुड्स को ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया जा रहा है, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, इमिटेशन इफेक्ट्स बहुत है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स बहुत है. एक्सपोर्ट में क्या हो सकता है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इंक्रीज हो रही है, डिस्कवरी ऑफ सबटाइटल ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है. प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी में क्या आ सकता है? जैसे कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन है, साइक्लिकल चेंजेस है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स है. So these all are the various causes which may disequilibrate the position of balance of payments. ठीक है? Now what we have, what is the role, what is the fundamental role of
WTO, ठीक है, I know I'm little hurry, ठीक है, I'm taking it you on a very flight mode, but as we all are restricted with the time and the entire syllabus is so huge that I could not cover up the whole syllabus in 1 hour duration, ठीक है, so kindly patient and kindly hold the time for the entire understanding. So what is a WTO basically? देखो WTO जो है ये establish हुआ है on the January 1st 1995 में, ठीक है, with the membership of 81 countries, ठीक है. So basically उनका क्या मकसद था, ये WTO को हमें क्यों शुरू करना था? तो WTO शुरू करने के पीछे उनका मकसद ये था ना कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए among the trading partners. जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स है पूरी दुनिया में, ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स शुड हैव द प्योर फेथ ओवर देयर एंटायर trading activities. So the trading activities should be very fair, very clear, transparent, and that there should not be have any kind of fight. And especially in case of essential, that they have to have forget all the political boundaries, social boundaries. ठीक है. We have n number of what we can say the objectives, principles of WTO and etc. ठीक है, तो ये हो गया WTO आपका. उसके बाद we have फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो क्या है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? सब लोग जानते हैं कि अगर दो देश व्यापार करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे करेंसी एक्सचेंज होगी. So how this currency get establishes, how the currencies get develop or it gets easily interlinked. ठीक है, so that way foreign exchange market is always establishes. तो यूजुअली पता है, यूजुअली यहाँ पे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि how the foreign exchange market establishes their trade. देखो, foreign exchange rate is purely depends on what? Depends upon the demand and supply of the goods and commodities. As much as if you demand, your currency rate will get deteriorate and vice versa. ठीक है. Then we have the purchasing power parity theory. Just remember students, काफी बार, ठीक है, काफी बार आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, मतलब 100% मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन प्लीज सब लोग अच्छे से करके जाना. परचेसिंग पावर, ठीक है, ये जो पूरी थियोरी है, ये पूरी थियोरी डेवलप की गई है बाय गुस्ताव कैसल, जो एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे. ये भी काफी बार आप लोगों को एमसीक्यू में ये काफी बार आता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से करके जाना. गुस्ताव कैसल, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी, PPP theory, ठीक है. The entire theory or the crux of the theory is based on that they have to maintain the power of currency same in the world. 100 रुपए की चीज जो हम भारत में खरीद रहे हैं और 100 रुपए की चीज जो हम लोग दूसरे देश में खरीद रहे हैं, उन दोनों की जो पावर है, that power should be same, should not be different. That is purchasing power parity. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा the very last chapter, that is the role of central bank in a foreign exchange management. ठीक है, सो ये क्या है वो आप लोग देख लेते हैं. ठीक है, देखो, remember one thing that the currency could not get exchanged definitely by interference of any monetary authorities. So RBI का जो रोल है ये भी काफी हद तक important है to develop or to establish foreign exchange market in the country or in the world. So initially क्या था ना, initially we used to have fixed exchange rate system, but now we have a flexible exchange rate system. Rather now we have a managed flexible exchange rate system. ठीक है. So we'll not go in depth of Bretton Woods system or that gold exchange rate system. ठीक है, लम्स को अच्छे से करके जाना, because लम्स काफी बार एग्जाम में आता है. That is liberalized exchange rate management system. ठीक है, so that often they will ask you for it. ठीक है, free float या clean float भी आता है, dirty float आता है. ठीक है,
फ्री या क्लीन का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, और डटी का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट काफी हद तक रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, जिसको हम कहते हैं डटी फ्लो। ठीक है, so this is what we have the end, because it's really huge. It will take hours and hours to make you understand the entire. Then we have a sterilized and unsterilized intervention. Okay, so that's what all or end from my side. Once again, thank you very much for the entire team. Thank you very much, the coordinator Reena Mishra ma'am, vice principal Dr. Santosh sir, IQC coordinator Bhati ma'am, principal Purswani sir. Thank you very much for the continuous support, and it's been my pleasure that keeps on going and coming to SST college is just my second home. Thank you very much. Over to you, Reena ma'am. Hello. Yes, ma'am, I can hear you. Okay, so you can stop sharing your PPT. Thank you, sir, for such a nice session. It was really very helpful for the students. Various difficult concepts you cleared, and that also in such a concise manner, in a limited span of time. Really, this subject is very technical for the commerce student, because they are more of into accounts and commerce related subject, and all of a sudden a technical subject so-called economics comes to them. So there is a kind of fear in the mind of students, because they have to be very specific while writing the answers. And as we have shifted from the online mode to offline mode, students are comparatively finding more difficult. So this pattern is really going to help them. So once again, on behalf of entire SST fraternity, I wholeheartedly convey my thanks to you, sir, for sparing your valuable time and delivering such an effective session for the students of TYBCom. I extend my thanks to the management of SST College of Arts and Commerce for giving us this opportunity to organize this crash course series for the TYBCom student. I also thank founder, principal, and chairman, Dr. J.C. Purswani sir, and IKC coordinator, Dr. Khushbu Purswani ma'am, for giving their guidance and support for such events for the students. I also extend my thanks to the coordinators as well as the fellow colleagues for helping and coordinating for the organization of this event. I also thank the technical as well as the administrative department for organizing this platform to deliver the session effectively and successfully. And last but not the least, students of TYBCom for attending the session and making this event successful. Thank you very much, sir. Thank you.